अभी क्या पढ़ना बाकी है? वैसे बाइनरी सर्च ट्री में पढ़ने लायक जो जो चीजें थी वो मैंने पढ़ ली है. नाउ रेस्ट ऑफ द थिंग्स आई वुड लाइक टू फोकस मोर ऑफ कंसेप्चुअली. कंसेप्चुअली मुझको ट्रीज के बारे में और भी कुछ नॉलेज गैदर करना है. So, क्या नॉलेज गैदर करना है? लेट अस गो वन बाय वन. आई होप यू पीपल रिकॉल व्हाट इज द टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ अ सर्चिंग. व्हाट इज द टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ अ सर्चिंग? सर्चिंग का टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या था? यू रिकॉल दैट? व्हाट इज द टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ सर्चिंग? यस, इट इज O ऑफ H. एब्सोल्युटली करेक्ट. अब जितना हाइट ज्यादा होगा उतना सर्चिंग स्लो होगा. यू अंडरस्टैंड दैट? अच्छी बात है. तो एक काम करो, अब हम लोग, आप लोगों के पास नोटबुक होगा, आपके पास नोटबुक होगा, नोटबुक हो तो नोटबुक निकालो और थोड़ा सा एक डायग्राम ड्रॉ करो. नोटबुक और नोटबुक निकालो और एक डायग्राम ड्रॉ करो. व्हाट इज दैट? मैं आपको नोड्स बताता हूँ. इस ऑर्डर में अगर मेरे पास नोड आ रहे हैं तो बाइनरी सर्च ट्री में वो किस तरह से अरेंज होंगे, किस तरह से अरेंज होंगे. प्लीज पे अटेंशन. द फर्स्ट नोड दैट यू गेट इज लेट्स से 70. ये रूट है. अभी अभी मैंने ट्री बनाना चालू कर दिया है. ये रूट है. तो जो नोड मैंने बनाना चालू किया है तो 70 कहां पर जाएगा? ऑब्वियसली यू फाइंड दैट 70 विल बिकम रूट. दैट इज कॉमन सेंस. Now the next node that I want to insert is let's say 60. Can you please tell me where 60 will go? Yes, 60 will go to the left of 70. And you say that, sir, this is normal. Yes, it is absolutely normal. What about 50? What about 50? The 50 will go to the left of this. Okay. And what about 40? What about 40? The 40 will again go to the left of this. Please note, अभी आप लोग यूजर से, आपने अगर मेनू ट्री में प्रोग्राम किया है तो यूजर डेटा एंट्री कर रहा है. और अगर यूजर डेटा एंट्री कर रहा है तो यूजर किसी भी ऑर्डर में एंटर कर सकता है. अब जिस ऑर्डर में यूजर एंटर कर रहा है उसके हिसाब से आपको ट्री में उसके लिए जगह देना है. एंड देन लेट्स से दैट यूजर इज एंटरिंग 30 20 10 इन द ऑर्डर. इफ 30 20 10 you find that your tree is actually developed something like this, where you find that for each node is kept to the left, to the left, to the left, to the left, and unfortunately इसका राइट नल है, 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 इसका राइट नल है. डोंट यू थिंक दैट ये ट्री कम लग रहा है? ये ट्री कम लग रहा है, ये लिंकली ज्यादा लग रहा है. yes, absolutely. ये ट्री कम लग रहा है, ये लिंकली ज्यादा लग रहा है. आई एम सेइंग दैट such type of tree is said to be skewed binary tree. Such type of tree is said to be skewed binary tree, and that was, I was giving you this example. So this one is left skewed binary tree. This is left skewed binary tree, and this one is like right skewed binary tree. One is left skewed binary tree and the second one, let's say, right skewed binary tree. So in binary tree, if only left or only right links are used, tree grows only on one side. Such tree is called as skewed binary tree. So either you can call it as left skewed or it could be like right skewed, depending on the data. जिस तरह से आपको इनपुट दिया गया है, या तो लेफ्ट स्क्यूड या तो राइट स्क्यूड बन सकता है. एंड व्हाट इज द टाइम कॉम्प्लेक्सिटी? द टाइम कॉम्प्लेक्सिटी फॉर एनी बाइनरी सर्च ट्री is nothing but O of H, where H stands for height. अगर आप लोग skewed binary tree आप लोग देख रहे हो, the skewed binary tree is something where the tree have maximum height which is same as number of elements. So आपने 7 एलिमेंट इंटर किए और आपका हाइट भी लगभग अभी 7 है, 6 है टू बी फ्रैंक, बट देन हाइट is directly dependent on like a number of elements. So I can say that the time complexity of searching in skewed binary tree becomes O of n. O of n, this is like linked list, and I would say that this is very poor way, this is really poor way of having a tree. तो आई एम वेरी श्योर अगर आप लोग कभी बाइनरी सर्च ट्री बना रहे हो तो आप लोग कभी भी स्क्यूड बाइनरी ट्री नहीं बनाना चाहोगे. एम आई करेक्ट? राइट. सो स्क्यूड बाइनरी ट्री इज वर्स्ट चॉइस दैट यू आर मेकिंग इट. लेकिन टू बी फ्रैंक ये आपके हाथ में नहीं है. आपने कोड तो बाइनरी सर्च ट्री का लिखा है, ये किसके हाथ में है? अल्टीमेटली जिस तरह से डेटा एंटर हो रहा है
उसके हिसाब से आप लोग उसको अरेंज कर रहे हो। अभी आपने अगर कल का कोड अगर मेनू ड्रिवन तरीके से लिखा होगा, ट्री का कल का कोड अगर आपने मेनू ड्रिवन तरीके से लिखा होगा, यू मस्ट हैव सीन दैट, यू मस्ट हैव सीन दैट कि अगर आप लोग एक-एक वैल्यू इंसर्ट कर रहे हो, देयर लाइकली चांसेस आर दैट कि ये लेफ्ट स्क्यूड या राइट स्क्यूड हो सकता है, डिपेंडिंग ऑन द ऑर्डर इन व्हिच द डेटा इज एंटर्ड। कोडिंग अलग से नहीं करना है, कोड आपका वही है। तो सर लेकिन फिर भी मैं ये चाहता हूं कि इसका सर्चिंग ऑप्टिमाइज्ड हो, इसका सर्चिंग ऑप्टिमाइज हो। हैव अ लुक एट दिस। इन दिस पर्टिकुलर केस, इन दिस पर्टिकुलर केस अगर आपको कोई भी नोड सर्च करना है तो आपको कितने इटरेशन लगेंगे मैक्सिमम? What is the time complexity of searching? The time complexity, you find that it depends on n. It depends on n in this particular case, straightforward. क्योंकि यहाँ पर h and n they are like a directly proportional. It is O of n, and I'm saying that अगर आपको कोई भी नोड ढूंढना है तो आपको मैक्सिमम कितने इटरेशंस लगेंगे? I can simply say that 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. So you see that over here in this example, maximum 7 iterations. A maximum 7 iterations it will take. मैं क्या कह रहा हूं? Just visualize that. मैं क्या कह रहा हूं? Please visualize that. Just if you rearrange the same tree, if you just rearrange the same tree, same number of element, same elements. Suppose that if I just rearrange the same tree, something like this, saying that this is a root, this is a root, इसका left it is 20, इसका right it is 60, and then it is let's say 10, it is let's say 30, 60, it is let's say 50, let's say 70. All right, and if this is a tree, again उतने ही nodes है, वही node है, but now you find that in this particular case अगर आपको कोई भी node search करना है तो maximum आपको कितने iterations लगेंगे? In this particular case, how many iterations you need maximum to search into the same tree? So you find that it is 3. तो सर फर्क क्या हुआ है? फर्क सिर्फ ये हुआ है द अरेंजमेंट ऑफ द नोड। द अरेंजमेंट ऑफ अ नोड, यहाँ पर ये जो आपका ट्री है, ये जो आपका ट्री है, दिस ट्री इज सेड टू बी द स्क्यूड बाइनरी ट्री। It is said to be the skewed binary search tree, while the right side tree जो आपको दिख रहा है, इसको हम लोग कहते हैं this is balanced binary search tree. It is a balanced binary search tree. In the first one, if you see that this one is having, let's say, maximum height, a maximum possible height, while the balanced binary search tree is exactly reverse of it. I'm saying that it is having a kind of a minimum possible height, minimum possible height, and that is the beauty of this. That is the beauty of this. Obviously, ideally जब भी आप लोग ट्री बनाना चाहोगे, आई एम वेरी श्योर यू वांट टू मेक अ ट्री with with minimum possible height, minimum possible height. So let us just take a look at this. Take a look at this more formally. More formally, what would be kind of definition of, what would be the definition of balanced binary search tree? मैं सिर्फ आपको conceptually बताया. तो formally उसका definition क्या होता है? Here you see. Here you see. To speed up the searching, height of binary search tree should be minimum as possible. If nodes in binary search tree arranged so that height is kept as less as possible, it is called as balanced binary search tree. And to understand the official definition of balanced binary search tree, you should be knowing something called a balance factor. What is balance factor? The balance factor is nothing but height of left subtree minus height of height of left subtree minus height of right subtree. ये typing mistake है. ये height of left subtree minus height of right subtree. तो आप this is nothing but you call it the balance factor. तो सर वो कैसे निकालते हैं? हाइट ऑफ लेफ्ट, हाइट ऑफ राइट। एक काम करते हैं, फटाफट से कैलकुलेट करते हैं एंड ट्राई टू फाइंड आउट ये जो नोड मेरे को दिख रहा है इसका थोड़ा सा मैं एक बैलेंस फैक्टर कैलकुलेट करने की कोशिश करता हूँ। सिट केयरफुली, आई वांट टू कैलकुलेट द बैलेंस फैक्टर ऑफ दिस नोड। एक यू वांट टू कैलकुलेट द बैलेंस फैक्टर ऑफ दिस नोड, गो अहेड, गो अहेड, टेक अ लुक एट दिस। अब आपको हाइट कैसे कैलकुलेट करना है आपको पता है, दिस इज सबसे नीचे वाला, इसका हाइट होता है 0। ये कल हम लोगों ने किया हुआ है, 0, 1, 2, 3, 4, 5. I'm very sure the height of this is nothing but 5. Okay, that is good. And then height of right side, a 70 के right में null है. What is the height?
70 के राइट में नल है. व्हाट इज हाइट? Height of null tree is nothing but -1. Oh, that is also we learn. Okay, that is good. And if you understood that, then what is the balance factor of 70? What is balance factor of 70? Balance factor of 70 is 5 minus -1. It is 5 minus -1. I guess the balance factor is 6. Balance factor is 6. आप लोग जो भी आपके पास कोई भी ट्री होगा, कोई भी ट्री होगा, आप उसके साथ जाके एक बार कैलकुलेशन करके देख सकते हो. लाइक फॉर एग्जांपल, यू कंसीडर दिस ट्री, यू कंसीडर दिस ट्री. मुझको 90 का, ये मुझको 90 का बैलेंस फैक्टर निकालना है. अगर मुझको 90 का बैलेंस फैक्टर निकालना है, सो कैन यू प्लीज टेल मी व्हाट इज बैलेंस फैक्टर ऑफ 90? ये पहले लेफ्ट का, इसका 70 का हाइट कितना है? व्हाट इज हाइट ऑफ 70? 0 1 2. आई गेस हाइट ऑफ 70 is 2, right? What is the height of 100? What is the height of 100? Height of 100, height of 100 is, yes, it is 0. It is 0. And then 2 minus 0. A 2 minus 0 is nothing but the balance factor will be equal to 2. इसका 90 का balance factor will be equal to 2. I hope you got the point. तो आपके पास कोई भी नोड हो, कोई भी ट्री हो, आप लोग हर एक ट्री का बैलेंस, हर एक ट्री के हर एक नोड का बैलेंस फैक्टर निकाल सकते हो. प्लीज नोट, बैलेंस फैक्टर ये टर्मिनोलॉजी ट्री की नहीं होती है, ये नोड की टर्मिनोलॉजी होती है. हर एक नोड का बैलेंस फैक्टर आप लोग निकाल सकते हो. लेकिन सर आप बाइनरी सर्च ट्री बताने वाले थे. हाँ बता रहा हूं, नाउ पे अटेंशन. अब मैं आपको बाइनरी सर्च ट्री बता रहा हूं, पे अटेंशन. इन बैलेंस बाइनरी सर्च ट्री, बैलेंस बाइनरी सर्च ट्री उसको कहते हैं, बैलेंस बाइनरी सर्च ट्री उसको कहते हैं जहां पर बैलेंस फैक्टर ऑफ ईच नोड इज आइदर -1 और 0 और +1. बैलेंस फैक्टर ऑफ ईच नोड इज -1, 0 और +1. अगर -1 से नीचे है देन इट इज नॉट बैलेंस्ड. अगर +1 से ऊपर है, अगेन इट इज नॉट बैलेंस्ड. अगर अगर -1 से नीचे है देन इट इज नॉट बैलेंस. अगर +1 से ऊपर है इट इज नॉट बैलेंस. सो कैन यू क्विकली टेल मी, डू यू बिलीव दैट ये जो ट्री आपको दिख रहा है, इज दिस ट्री इज बैलेंस ट्री? Oh no, not at all, not at all balance, not at all balance. और बाय द वे मैं क्या कह रहा हूं, अगर एक भी नोड का अगर बैलेंस फैक्टर -1, -1, 0 और +1 के अलावा कुछ है, देन यू कैन से दैट ट्री इज नॉट बैलेंस फॉर अ सिंगल नोड. यहाँ तो बहुत सारे नोड की वाट लगी हुई है, दैट यू आर एबल टू सी दैट. एंड एंड तो सर इस ट्री को हम लोग किस तरह से बैलेंस कर सकते हैं? A tree can be balanced by applying series of left or right rotations on unbalanced nodes. तो जो नोड आपके अनबैलेंस है, जो नोड अनबैलेंस है, उसके ऊपर आप लोग लेफ्ट या राइट रोटेशन लगा सकते हो. नाउ योर विजुअलाइजेशन इज नीडेड, प्लीज पे अटेंशन. लेफ्ट या राइट रोटेशन लगा सकते हो. सो व्हाट डू मीन लेफ्ट और राइट रोटेशन? लेफ्ट और राइट रोटेशन, आई एम सेइंग दैट यू कंसीडर वन नोड एज अ एक्सिस. You consider one node as an axis. I'm saying that ये 70 को आप लोग एक्सिस करके ट्रीट करो. अब यहां पर अगर आपको इसको बैलेंसिंग करवाना है तो यू कैन डू वन थिंग, आप इसको राइट रोटेट कर सकते हो. You could treat 70 as a kind of axis and now you can do the right rotation. So please visualize that. आप लोग वहां पर आपका पॉइंट कंसिडर करो and then you can pull 70 to the right side. If you pull 70 to the right side, can you please tell me root कौन होगा and how the tree will be organized? अगर मैं 70 को नीचे खींचता हूं तो क्या हो जाएगा? Yes, obviously I understand that in that particular case 60 will be on the top, a 60 will be on the top, 70 will probably come to the right of that, and then rest all nodes, that will follow 60. I hope you are able to visualize that. This is very simple that I have shown you. Okay, this is done. But now, do you believe that it is balanced? Do you believe that this is balanced? Not really. I want to once again check the balance factor. Can you calculate the balance factor of 60 once again? मैंने कहा कैलकुलेट करो, गेस मत करो. Calculate once again. Balance factor of 60. Balance factor 0, 1, 2, 3, 4. ए लेफ्ट का 4 है, लेफ्ट का 4 है, और राइट का, ए राइट का you'll find that 0. So 4 minus 0 comes out to be 4. Oh, I understand that.
this balance factor is equal to 4. So is it balanced? Is it balanced? Oh, no way. So if you want to again, you say that ये आपने इसको राइट रोटेशन किया और आपने भी इसको बैलेंस किया, अब इसके साथ क्या करोगे? कॉमन सेंस, इसके साथ क्या करोगे? सेम, गो ऑन 60, 60 एज एक्सिस एंड अगेन डू द राइट रोटेशन ऑन दैट, अगेन राइट रोटेशन ऑन दैट। और वापस से प्लीज विजुअलाइज, मैं कोई बड़ा और आपको रॉकेट साइंस नहीं बता रहा हूं, जस्ट विजुअलाइज दैट। खींचो वापस से, किसको खींचना है? 70 को वापस से नीचे खींचो। सो इफ यू अगेन पुलिंग द 70, अगेन यू आर पुलिंग द 70 considering 60 as axis, can you tell me what will be the new root? Oh yes, new root will be now 50. A new root will be 50, and then 60 will go to the right of that, 70 is going right of that, and then we have got 40, 30, 20, and 10. Oh, that is fantastic. But can you please tell me now at this moment what is the new balance factor? New balance factor, please do the calculation. 0, 1, 2, 3. This side it is 3, 0 and 1. 3 minus 1 comes out to be 2. 3 minus 1 comes out to be 2. So your balance factor is now equal to 2. So my question, is this balanced? Not yet. हमारा रेंज क्या है? -1 to +1 का रेंज है. 2 is not yet balanced. Okay, what is to be done? Again rotate right on 50. Again rotate right on a 50. You rotate right on a 50, and now tell me who will become new root. Oh yes, new root will be probably 40. You go ahead, I guess 40 will be on the top, a 40 will be on the top, and then a 40 will be on the top. So 30, 20, 10. Okay, that is good. Or 40 के right में, 40 के right में, then will be 50, 60, and 70. And can you please tell me what is balance factor of 40 now? Oh yes, ये सबका सही आया. So balance factor of this is equal to 0. अब इसका मतलब ये है कि this node is now well balanced. So do you want to say that the tree is balanced? Is tree balance? नहीं, एक node balance हो गया है. रुको, एक node balance हो गया है. You need to ensure that हर एक node आपका balance होना चाहिए. ओ हर एक नोड आपका बैलेंस होना चाहिए. Why don't you check the balance factor of this node? Can you please check the balance factor of this node and do the calculation? And the calculation again says that this is 0 1, यहाँ पर 0 1 और यहाँ पर -1. A 1 minus minus 1, 1 minus minus 1 is saying that the इसका balance factor is equal to 2. A 1 minus minus 1 मतलब 1 plus 1, it is 2. And if it is 2, I need to go ahead, I need to once again do the right rotation. एंड ये मतलब क्या करना है अभी मुझको? आई वांट टू डू द राइट रोटेशन ऑन 30. अगर मैं राइट रोटेशन ऑन 30 करता हूं तो क्या होगा? अगर मैं राइट रोटेशन ऑन 30 करता हूं तो क्या होगा? यस, 20 विल बिकम रूट. ए रूट नॉट रूट, 30 की जगह पे 20 आ जाएगा. ए रूट तो अभी भी 40 रहने वाला है, 30 की जगह पे वहां पर 20 आपके एक्सिस के ऊपर 20 आ जाएगा. सो जिसको आपने एक्सिस ऑफ रोटेशन कंसीडर किया है, दैट विल बी 20. ओके, यू कंटिन्यू फर्दर. आई एम सेइंग दैट लेट अस गो अहेड. तो 20 यहां पर आ जाएगा, ए 30 उसके नीचे आएगा और 10 यहां पर आ जाएगा. ऑब्वियसली 40 अभी भी अपनी जगह पे है, एंड देन इट लाइक से 60 एंड सॉरी 50 रह गया, माय मिस्टेक. दिस लाइक 50, दिस इज 60 एंड दिस इज 70. ओके, दैट इज गुड. नाउ टेल मी व्हाट इज द न्यू बैलेंस फैक्टर ओवर हियर. अब इसका बैलेंस फैक्टर कितना है? 20 का बैलेंस फैक्टर 0. वेरी गुड. और 10 का बैलेंस फैक्टर, 10 का बैलेंस फैक्टर, यस अगेन इट इज 0. और 30 का बैलेंस फैक्टर, यस दैट इज आल्सो 0. ए मतलब ये जिसको मैंने बैलेंस किया है उसका लेफ्ट सब ट्री बैलेंस हो गया है. और यस, इसका लेफ्ट सब ट्री बैलेंस हो गया है. अब व्हाट अबाउट राइट सब ट्री? व्हाट अबाउट राइट सब ट्री? जस्ट चेक करो, 50 का बैलेंस फैक्टर निकालो. 50 का बैलेंस फैक्टर पहले बताओ. 50 इज बैलेंस फैक्टर, yes it is -2. 50's balance factor is -2, and if it is -2, what I need to do? माइनस में जब भी होता है तब मुझको लेफ्ट रोटेशन करना पड़ता है. गो अहेड एंड डू द लेफ्ट रोटेशन.
As you do the left rotation, what will happen? As you do the left rotation, what will happen? 60 will come in place of 50, and and 50 will become its left child. Okay, and that is the reason what diagram you will get is something like this. And now you tell me what is the balance factor of this new. Iska balance factor 0, iska balance factor 0, iska bhi balance factor 0. Now tell me, is this tree is balanced? Is this tree balanced? Yes, this is my balanced binary search tree. मैं ये नहीं कह रहा हूं कि हर बार जीरो ही होना चाहिए. ये जीरो होना चाहिए जरूरी नहीं है. It could be +1, it could be -1, it could be 0. It could be +1, it could be -1, it could be 0. I hope this is clear. What is balanced binary search tree and how the things go? Obviously थोड़ा सा number of nodes शायद आपको calculate करके देखने चाहिए. A number of nodes थोड़े से कैलकुलेट करके देखने चाहिए. लेट अस ट्राई टू कैलकुलेट नंबर ऑफ नोड्स. अब यहाँ पर अगर आप इसका हाइट चेक कर रहे हो, यहाँ पर हाइट कितना है? व्हाट इज द हाइट ऑफ दिस न्यू ट्री? इस नए ट्री का हाइट कितना है? 2. यस, हाइट इज इक्वल टू 2. पे अटेंशन. इफ द ट्री, मैं यहाँ पर फिर से ड्रॉ कर लूं. लेट्स से इट वाज 40, इट वाज 20, इट वाज 10, इट वाज 30, इट वाज 60, it was 50, it was 70. You continue further. What I'm saying is that height is equal to height is equal to 2. Have you calculated total number of nodes kitne? Can you please count total number of nodes kitne? Total number of nodes are 7. Total number of nodes are 7. So I can simply say that the total number of the node count is equal to 2 raised to h plus 1 minus 1. Can you note that? 2 raised to h plus 1 minus 1. Oh, that is great. In general, अगर आपको यकीन नहीं होता है, you continue further and you can draw one more diagram with, let's say, height is equal to 3. अगर height 3 consider करते हो, and let me draw. अब मैं सीधा draw कर रहा हूं. मैं बाइनरी सर्च ट्री मैंने ड्रॉ नहीं किया, मैंने सिर्फ बाइनरी ट्री ड्रॉ किया, बट आई गेस द फॉर्मूला रिमेन्स सेम. हाँ, have you noted? Now in this particular case, the number of nodes. So I told you the formula यहाँ पर है. Number of nodes इस ट्री में कितने हैं? Have you done counting? Have you done counting? Yes, it is 15. So here you find that the number of nodes in this case are 7. Number of nodes in this case are 15. Okay, that is good. Hey, wait for a minute. There is few more things. There is a concept, और जो usually MCQ एग्जाम्स जब होते हैं उसमें ये concept usually आता है. यहाँ पर how many leaf nodes are there? How many leaf nodes are there? Can you count it over here? How many leaf nodes are there? Leaf nodes. Yes, the leaf nodes over here, there are 8 leaf nodes. There are 8 leaf nodes. And if you count it over there, oh, over here, whatever you see, there are 7 non-leaf nodes. There are total 7 non-leaf nodes. I hope you are able to see that. So considering the height, I'm saying that number of leaf nodes, total leaf nodes, leaf node leaf nodes is equal to 8. So number of leaf nodes is equal to 2 raised to h, is equal to 2 raised to h. And non-leaf nodes, non-leaf nodes non-leaf nodes, yes, it is 2 raised to h minus 1. It is 2 raised to h minus 1. I hope you are able to see that. It is leaf node, and you find that the non-leaf node in our case is equal to 7, is equal to 7. Okay, that is good. एग्जाम में मैंने देखा है कि लोग और भी कुछ टर्म्स यूज करते हैं. द लीफ नोड्स, दे आर आल्सो समटाइम रेफर्ड एज external nodes. They are also referred as
external nodes, and non-leaf nodes, they are also referred as internal nodes. So कभी कभी ऐसे क्वेश्चन घुमा के पूछे जाते हैं कि instead of like leaf node and non-leaf node, they're asking how many external nodes are there and how many internal nodes are there. So at that time, you should be having a formula. Acha, okay, this is how the things can be calculated. This is how things can be calculated. Now it is in front of you. If this is clear, if this is clear, calculations clear हो गए होंगे, हम लोग आगे बढ़ते हैं. अब बाय द वे क्वेश्चन इज दैट वो जो लेफ्ट रोटेशन और राइट रोटेशन ये बेसिकली होता कैसे? अ बिट ऑफ लॉजिक ऑफ लेफ्ट रोटेशन राइट रोटेशन. मैं लेफ्ट रोटेशन राइट रोटेशन वापस से एक बार, आई डू नॉट वांट टू वेस्ट योर टाइम. ठीक है, वापस से हम लोग कोड, अगर आपको इंटरेस्ट है आई कैन शेयर द कोड विथ यू. आई गॉट रेडीमेड कोड, बट यू अंडरस्टैंड लॉजिक. राइट रोटेशन जब हम लोग करते हैं तो हाउ राइट रोटेशन इज टू बी टेकन केयर. मैं पेपर वर्क करके आपको दिखा रहा हूं, प्लीज पे अटेंशन. पेपर वर्क करके दिखा रहा हूं राइट रोटेशन कैसे होने वाला है. 40 के ऊपर अगर मैं राइट रोटेशन करने की कोशिश करता हूं, ऑब्वियसली लिसन केयरफुली, अभी ये ट्री बैलेंस्ड है. मैं सिर्फ यहां पर मैं बैलेंसिंग नहीं पढ़ा रहा हूं, यहां पर मैं राइट रोटेशन पढ़ा रहा हूं. आई रिपीट वंस अगेन, यहाँ पर टॉपिक का नाम राइट रोटेशन है, बैलेंसिंग नहीं है. पहली चीज तो आप लोग यहाँ पर अच्छे से देख सकते हो, 40, 20, 10, 30, 60, द ट्री इज ऑलरेडी बैलेंस्ड ट्री. ट्री इज ऑलरेडी बैलेंस्ड ट्री, क्योंकि बैलेंस फैक्टर या तो जीरो है, या तो वन है, या तो -1 है. सो इट इज बैलेंस्ड. बट स्टिल अगर मुझको इसके ऊपर राइट रोटेशन करना है, तो राइट रोटेशन करते हैं तो एग्जैक्टली क्या होता है और क्या होना चाहिए, व्हाट आर द चैलेंजेस, लेट अस जस्ट टेक अ लुक एट दिस. कोई मुझको बताएगा, ये लास्ट वाला एग्जांपल ज्यादा आसान था. यहाँ पर आपने नोट किया, वहां पर सिर्फ लेफ्ट का नोट था, राइट में कुछ था ही नहीं. तो यू नो, इट वाज सो इजी. यू जस्ट पुल इट टू वन साइड एंड यू से दैट ओ दिस इज वर्किंग. बट वेट, अब यहाँ पर थोड़ा सा कंफ्यूजन है. मुझको मुझको 40 के ऊपर राइट रोटेशन करना है. नाउ कैन यू टेल मी, इफ आई जस्ट पुल दिस 60 डाउन, इफ आई जस्ट पुल दिस 60 डाउन, व्हाट विल हैपन? 20 की जगह पे कौन आ जाएगा? सॉरी, 40 की जगह पे कौन आ जाएगा? 40 की जगह पे कौन आ जाएगा? Oh, you are very sure? Whatever you are saying is correct. A 20 will come on the top. See it carefully. 20 के राइट में, ये बोलो फटाफट. 20 के राइट में, yes, obviously it will be 14. और 40 के राइट में, 40 के राइट में it will be 16. 20 के लेफ्ट में कौन आएगा? 20 के लेफ्ट में कौन आएगा? Again, you keep a look at this and you are pulling this. As you are pulling this, so ये 16 नीचे चला गया, 40 उसकी जगह पे आ गया, 20 has gone up, you are able to see that, and obviously 10 जो उसके लेफ्ट में था वो उसके साथ साथ ऊपर चला जाएगा. I hope you are able to visualize, and if you are able to visualize, I'm saying that 10 goes on the top. but इस सारे चक्कर में एक प्रॉब्लम हो गया. What is the problem there? What is the problem there? Oh, 30, there is a problem. Earlier you seen that 20 के राइट में 30 था, 20 के राइट में 30 था. अब सिंस आपने उसको खींच ले लिया, सिंस आपने उसको खींच लिया, अब 20 के राइट में 40 आ गया. अगर 20 के राइट में 40 आ गया तो सर वो 30 जाएगा कहां पर? कैन यू प्लीज टेक अ लुक एट एंड टेल मी व्हाट इज अ गुड प्लेस फॉर 30? Oh yes, good place for 30 should be 40's left. Am I correct? Yes, absolutely. So you find that ये यहाँ पर जाना चाहिए. एंड जब मैं यहाँ पर इस ट्री के ऊपर राइट रोटेशन कर रहा हूँ, जब मैं इस ट्री के ऊपर राइट रोटेशन कर रहा हूँ, एट दैट टाइम ए भाई तो आपने यहाँ पर नोट किया, इन दिस केस रूट वाज पॉइंटिंग टू दिस नोड, रूट वाज पॉइंटिंग टू दिस नोड. आफ्टर right rotation is completed, right rotation will is completed, the root will point to this node. Am I correct? अब नया root is nothing but 20. नया root is nothing but 20. Okay, that is good. Wait for a minute. Purposefully similar tree I have drawn below. Purposefully similar tree I have drawn below. Let us consider one more tree. And for this tree, if you want to do the right rotation, if you want to do the right rotation, now what should happen? अगर इस ट्री को राइट रोटेशन करना है तो क्या होना चाहिए? I guess it will be still similar, isn't it? It is still similar. But in this case, there is one change.
वापिस से 20 ऊपर आएगा, 60 नीचे जाएगा, 10 यहाँ पर आएगा और 40 के लेफ्ट में 30 जाएगा, दैट पार्ट विल रिमेन सेम। हाउएवर 40 को कौन पॉइंट कर रहा है? 40 को पॉइंट कौन कर रहा है? 50 का लेफ्ट पॉइंट कर रहा है। वो 50 का लेफ्ट पॉइंट कर रहा है, सो व्हाट विल हैपन आफ्टर रोटेशन? व्हाट विल हैपन आफ्टर रोटेशन? आफ्टर रोटेशन 50 के लेफ्ट में 20 आएगा। आफ्टर रोटेशन 50 के लेफ्ट में 20 आएगा। आई होप यू अंडरस्टैंड दैट। सी अल्टीमेटली रोटेशन प्रोसेस रिमेन्स सेम। Rotation process remains same. In earlier case, root was pointing to this particular node. So now afterwards, root will start pointing to the 20. But in this particular case, 40 was the node earlier over here. Parents left was pointing to that. Parents left was pointing to that. After doing rotation, the 20 will come in place. So parents left will point to 20. Parents left will point to 20. बाद में मैं क्वेश्चन पूछने वाला हूं, जस्ट पे अटेंशन. व्हाट अबाउट दिस केस? व्हाट अबाउट दिस केस? अगेन द ट्री इज सिमिलर. तो वापस से अगर मैं इसके ऊपर राइट रोटेशन करता हूं, व्हाट विल हैपन? अगर मैं इसके ऊपर राइट रोटेशन करता हूं, व्हाट विल हैपन? अगेन द रीअरेंजमेंट विल बी स्टिल सेम. रीअरेंजमेंट विल बी स्टिल सेम, बट नाउ व्हाट इज डिफरेंस? यहां पर क्या होगा? यस, यू फाइंड दैट द 20 विल कम टू द 5 राइट. यस, पेरेंट्स राइट. नाउ यू फाइंड दैट ये यहां पर पेरेंट का राइट इसको पॉइंट कर रहा है. पेरेंट का राइट इसको पॉइंट कर रहा है. सो आफ्टर डूइंग रोटेशन 20 will come in place, and if 20 comes in place, then 5 right will point to that. कुछ याद आया? कुछ याद आया? अरे कुछ याद आया क्या? यस, डिलीशन लॉजिक. एब्सोल्युटली. सो जो केयर हमने वहां पर डिलीशन में किया था, ये जो केयर हमने डिलीशन में किया था, समथिंग सिमिलर केयर मुझको यहां पर भी करना पड़ेगा. अगर आप लोग कोड लिखने के बारे में सोच रहे हो तो, अगर आप लोग कोड लिखने के बारे में सोच रहे हो तो ये आपको यहां पर भी करना पड़ेगा. यू कैन ऑलवेज से दैट, दिस इज एक्सिस. आप इसको एक्सिस कह सकते हो. एंड इफ यू आर कॉलिंग दिस एज एक्सिस, आई एम वेरी श्योर यू कैन कॉल दिस एज, लेट्स से, न्यू एक्सिस. यू कैन से न्यू एक्सिस. अगर आप लोग राइट रोटेशन कर रहे हो, अगर आप उसको राइट साइड में पुल कर रहे हो, द न्यू एक्सिस इज गोइंग टू बिकम एक्सिस. And then what I need to take care? What I need to take care? If axis is root, then new axis, then root will start pointing to the new axis. If axis is parents left, then 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 after some time it will, after rotation, it will start pointing to the new axis. And if axis is parents right, then new axis, it will start pointing, sorry, my mistake, it will start pointing to this. Parents right will start pointing to the new axis. अरे have you got, are you getting the point? प्लीज नोट, ये कोड कोई बहुत बड़ा कोड नहीं है. कोड कोई बहुत बड़ा कोड नहीं है, लेकिन इफ यू आर एबल टू डू द पेपर वर्क, आई बिलीव इट इज मोर देन सफिशिएंट. एक्चुअल कोड लेवल के ऊपर जाने की एज सच कोई जरूरत नहीं है. आई बिलीव सो. इसलिए मैंने आपको सिर्फ बताया कि दीज आर द स्टेप्स दैट यू फॉलो इफ समवन इज इंटरेस्टेड इन राइटिंग अ कोड. तो जैसे अभी आप लोगों ने स्टेप्स फॉलो किए, यू आर कॉलिंग इट एक्सिस एंड न्यू एक्सिस, उसके हिसाब से आप लोग कोड लिख सकते हो. राइटिंग कोड इज नॉट समथिंग वेरी ग्रेट स्टफ, यू नो. यू कैन ऑलवेज राइट, यू नो, न्यू एक्सिस is nothing but axis left. Oh, you see that. After that, you continue further. You simply say that न्यू एक्सिस के राइट में, ए न्यू एक्सिस के राइट में एक्सिस आने वाला है. Oh, you are saying that go ahead, you want to say that न्यू एक्सिस के राइट में एक्सिस आने वाला है. Oh, it is very easy. However, लेकिन इन दैट केस न्यू एक्सिस का जो राइट है, जो ओल्ड राइट है, वो शायद ऑर्फन हो जाएगा. ये उसको ऑर्फन नहीं होने देना है. तो 30 को कहां पर भेजना है? ये 30 को कहां पर भेजना है? 30 को भेजना है, ये जो ओल्ड एक्सिस था उसके लेफ्ट में भेजना है. तो उसको कहां पर भेजना है? एक्सिस के लेफ्ट में भेजना है. सो यू कैन ऑलवेज टेक केयर, एक्सिस डॉट लेफ्ट इज इक्वल टू न्यू एक्सिस डॉट राइट. न्यू एक्सिस dot right. Okay, that is good. And the last step, and what is the last step? The last step is that
if your axis is root, if your axis is root, can you complete the last statement? If axis is equal to root, can you please complete the last statement? Yes, absolutely. You can simply say that now root is equal to new axis, and then something similar, a similar if else वाले statement जैसे हम लोग deletion में लिखे थे, on the parallel you can complete, continue further. If axis is equal to parent left is equal to new axis, else parent right is equal to new axis, and then you can complete the logic if you are really interested in. तो मुझको आपको ये बताना है, कोड मैं आप लोगों से एक्सपेक्ट नहीं कर रहा हूँ, लेकिन अगर लिखना है तो कोई बहुत बड़ा तीर नहीं मारना है. इट इज हार्डली 4 लाइन्स ऑफ कोड दैट यू कैन राइट इट. यू जस्ट अंडरस्टैंड अ कंसेप्ट कि जब हम लोग राइट रोटेशन करते हैं देन इट इज कन्वर्टेड फ्रॉम हेयर टू हेयर. समवन वाज आस्किंग मी से इज इट एवीएल ट्री. नहीं, मैं एवीएल ट्री मुझको आपको पढ़ाना है, लेकिन एवीएल ट्री पढ़ाने के लिए जो फाउंडेशन चाहिए वो फाउंडेशंस बनाने की कोशिश कर रहा हूं. टेक अ लुक एट द नेक्स्ट, टेक अ लुक एट द नेक्स्ट. कैन यू प्लीज टेल मी लेफ्ट रोटेशन जब होगा तो क्या करना चाहिए आपको? लेट्स से मुझको 40 के ऊपर लेफ्ट रोटेशन करना है. अगर मुझको 40 के ऊपर लेफ्ट रोटेशन करना है, मुझको 40 के ऊपर लेफ्ट रोटेशन करना है, तो विल यू प्लीज हेल्प मी, विल यू प्लीज हेल्प मी. हम लोग इसको नाम देते हैं, हम लोग इसको एक्सिस कहते हैं, और इसको हम लोग सॉरी, ये अभी न्यू एक्सिस कौन होगा? अगर मैं लेफ्ट रोटेशन करूंगा तो न्यू एक्सिस कौन होगा? डायग्राम देख के समझो, मैंने कहा ना कोड मत समझो, डायग्राम देख के समझो. यू अंडरस्टैंड दैट ऑब्वियसली दिस विल बिकम न्यू एक्सिस. सो आई एम वेरी श्योर दैट आफ्टर डूइंग लेफ्ट रोटेशन, after doing left rotation, what I need to do, what I need to do, the 60 will come on the top. Okay, yes, 60 will come on the top. 60 के लेफ्ट 60 के लेफ्ट में क्या आएगा? अभी हम लोग पुल कर रहे हैं लेफ्ट साइड से, वी आर पुलिंग फ्रॉम लेफ्ट साइड, वी आर पुलिंग फ्रॉम लेफ्ट साइड. व्हाट विल हैपन? हम लोग ऐसे पुल कर रहे हैं तो 60 will go on the top. If 60 goes on the top, what will be there? Yes, the 40 will be to the left of this. और 40 के लेफ्ट में क्या आएगा? और 40 के लेफ्ट में क्या आएगा? वो 40 के लेफ्ट में इट विल बी 20. सो इसके लेफ्ट में आएगा 14 और 40 के लेफ्ट में आएगा 20. ओके, दैट इज ग्रेट. दिस इज डन. बट व्हाट इज नेक्स्ट? What is next? A 60 is on the top. As 60 is on the top, at 60 is on the top, अब क्या करना चाहिए? 60 becomes root. Okay, that is okay. 60 के राइट में क्या आएगा? 60 के राइट में, ये 60 के राइट में पहले 70 था, ऑब्वियसली 70 will be as it is. बट इस सारे चक्कर में 60 के लेफ्ट में जो नोड था वो बेचारा ऑर्फन हो गया. हाँ, उसका क्या करना है? यस, यू अंडरस्टैंड इट वेरी वेल. वो 40 के राइट में चला जाना चाहिए. दैट इज प्रीटी सिंपल. एंड देन यू कंटिन्यू विथ योर लॉजिक. अगर आपका रूट अभी एक्सिस को पॉइंट कर रहा था, अगर आपका रूट एक्सिस को पॉइंट कर रहा था, तो ये पूरा रोटेशन खत्म होने के बाद में रूट विल स्टार्ट पॉइंटिंग टू द न्यू एक्सिस. ए रूट विल स्टार्ट पॉइंटिंग टू द न्यू एक्सिस. आई गेस दैट जैसे मैंने यहां पर 3 लाइन का 4 लाइन का कोड लिखा है, ऑन द पैरेलल 4 लाइन्स ऑफ कोड कैन बी वेरी वेल रिटन ओवर हेयर. लेफ्ट रोटेशन. Is this clear to everyone? Okay, great. Now you ask the next question. अब कोई मुझको इस क्वेश्चन का आंसर बताएगा, लेफ्ट रोटेशन कब करना चाहिए और राइट रोटेशन कब करना चाहिए? उससे पहले लेफ्ट और राइट रोटेशन क्यों करना चाहिए? Why to do left और राइट रोटेशन? What is the primary purpose? हम लोग ये क्यों पढ़ रहे हैं? पहले ये बताओ, नहीं तो बाद में पता चलेगा सर सब कुछ पढ़ लिया लेकिन इससे कुछ समझ में नहीं आ रहा. हाँ, यस, इट इज बेसिकली फॉर बैलेंसिंग. इट इज बेसिकली फॉर द बैलेंसिंग. तो बैलेंसिंग के लिए, हाँ, बैलेंसिंग के लिए वी आर बेसिकली डूइंग लेफ्ट रोटेशन और राइट रोटेशन. ये आपको समझ में आ गया. नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज दैट कि लेफ्ट रोटेशन कब करना चाहिए और राइट रोटेशन कब करना चाहिए? लेफ्ट रोटेशन कब करना चाहिए, राइट रोटेशन कब करना चाहिए? ये आपको थोड़ा सा अंदाजा इस डायग्राम से भी आ गया होगा. जहां जहां पर बैलेंस फैक्टर पॉजिटिव था, आपने नोट किया, जहां जहां पर बैलेंस फैक्टर 1 से ज्यादा था वहां वहां पर हमने राइट रोटेशन किया था. और जहां जहां पर बैलेंस फैक्टर -1 से कम था, जहां जहां पर बैलेंस फैक्टर -1 से कम था, तो हम लोगों ने इसका लेफ्ट रोटेशन किया था. आई होप यू हैव सीन दैट. गुड. ओके, वैसे ये देख के पता चली जाएगा, नो डाउट ऑन दैट. लेट मी क्विकली रिपीट दिस पार्ट, समवन इज आस्किंग मी, तो लेट मी जस्ट शो यू.
व्हाट आई एम सेइंग इज दैट, मैं क्विकली इसको रिपीट करता हूं और फिर हम लोग आगे वाले पार्ट के ऊपर जाते हैं. व्हाट आई एम सेइंग इज दैट ए दिस इज 40, ए दिस इज 14 एंड दिस इज 16. तो अगर मैं इसको लेफ्ट रोटेट करता हूं, अगर मैं इसको लेफ्ट रोटेट करता हूं तो क्या होना चाहिए, ये जो न्यू एक्सिस है, न्यू एक्सिस के लेफ्ट में, न्यू एक्सिस के लेफ्ट में एक्सिस आना चाहिए. यस डेफिनेटली न्यू एक्सिस के लेफ्ट में एक्सिस आना चाहिए. जो आपको यहाँ पर दिख रहा है, न्यू एक्सिस के लेफ्ट में एक्सिस आ रहा है. बट द प्रॉब्लम इज इन दिस पर्टिकुलर केस व्हाट विल हैपन, न्यू एक्सिस के लेफ्ट में ऑलरेडी 50 है, ए न्यू एक्सिस के लेफ्ट में ऑलरेडी 50 है. सो आई गेस दैट 50 विल गेट लॉस्ट. oh yes, 50 will get lost. तो what I should take care, what I should take care, वो 50 का मैं क्या करूँ so that it is not lost. I guess that all I need to do is that उसको एक्सिस के राइट में डाल दो. all you need to do is that उसको एक्सिस के राइट में डाल दो. and this is something we need to take care. This will still ensure that all the node to the left of this are smaller than that and all the node to the right of this are greater than that. I hope Sachin it is clear. Right? No problem. तो आई वाज जस्ट सेइंग दैट लेफ्ट रोटेशन राइट रोटेशन आपको समझ में आ गया. इन जनरल कैसे करना ये भी आपको समझ में आ गया. और अगर आपको इतना समझ में आ गया, ऐसे आपको लगता है, लिसन केयरफुली, अगर आपको ऐसे लगता है कि आपको समझ में आ गया, देयर इज वन स्मॉल प्रॉब्लम स्टेटमेंट फॉर यू. प्लीज विजुअलाइज दिस एंड टेल मी हाउ डू यू बैलेंस दिस. करके देखो. जो अभी हम लोग फॉर्मूला बात कर रहे हैं कि लेफ्ट क्या कहते हैं, बैलेंस फैक्टर अगर निगेटिव होगा तो क्या कहते हैं, ये वाला रोटेशन करो या फिर वो वाला रोटेशन करो. जस्ट अप्लाई दैट लॉजिक एंड यू सी सम प्रॉब्लम्स ओवर देयर. सो व्हाट प्रॉब्लम्स दैट यू सी ओवर देयर, टेक अ लुक एट दिस. पहले ट्री तो देखो, बाद में प्रॉब्लम समझ में आ जाएंगे. विजुअलाइज दिस. सपोज दैट ए दिस इज 10, दिस इज 10. 10 के राइट में, 10 के राइट में लेट्स से इट इज 40, लेट्स से इट इज 40. एंड देन 40 के लेफ्ट में, 40 के लेफ्ट में लेट्स से इट इज 20. एंड 20 के लेफ्ट में, 20 के लेफ्ट में लेट्स दैट इट इज 30, इट इज 30. नाउ इन दिस पर्टिकुलर केस कैन यू check what is the balance factor of 10? Can you please check what is the balance factor of 10? Can you do the bit of calculation for me? Balance factor of 10. इसके लेफ्ट में कितना है, ए लेफ्ट में -1 है, लेफ्ट में -1 है. राइट में कितना है, 0 1 2. ए 0 1 2 -1 -2. I hope you are getting a point. So 0 1 2 and then this is -1, so this is -3. And what your instinct says, if it is balance factor is equal to -3, what you should do, what your instinct says, what you should do, you should simply say I should do a left rotation. But let me tell you, this is not always a solution. So why it is not a solution? Why don't you try it? Go ahead and try a left rotation on this. Try a left rotation on this. As you try a left rotation on this, what will happen? What will happen? This is the axis and this is, let's say, new axis. Now tell me 10 की जगह पे क्या आएगा? 10 की जगह पे आएगा 40. I understand. और 40 के लेफ्ट में क्या जाएगा? 40 के लेफ्ट में क्या जाएगा? 40 के लेफ्ट में जाएगा 10. Okay, that is good. But you understand that in this case the 20 might get lost. और जो लॉस होने वाला है उसको हम लोग कहां पर डालते हैं? अरे जो लॉस होने वाला है उसको हम लोग कहां पर डालते हैं? अरे 10 के राइट में डालेंगे ना उसको. हेलो, यस 10 के राइट में डालेंगे. गो अहेड, यू पुट इट इनटू द 10th राइट, यू पुट इट 10th राइट. एंड ऑब्वियसली 30 तो वैसे भी उसके नीचे ही है. एंड नाउ कैन यू कैलकुलेट द न्यू बैलेंस फैक्टर? Can you calculate the new balance factor? The earlier, the balance factor was -3 and now your new balance factor is equal to 3. You do the calculation. This is 0, 1, 2 and this one is -1. 2 minus -1 comes out to be 3. Oh, now there is a problem. And then, तो सर एक काम करते हैं, इसके ऊपर राइट रोटेशन करते हैं. If you really want, go ahead और इसके ऊपर अभी राइट रोटेशन करवा लो.
You do the paperwork if you are really interested in, but if you do the paperwork, you realize that after right rotation, it will once again will give you the same tree. और फिर हम लोग क्या करेंगे? हम लोग घूमते रह जाएंगे. I hope you understand. So what I want to tell you is that just by looking at the balance factor, just by looking at the balance factor is negative or positive, you may not want to take a decision whether it should be a left rotation, whether it should be a right rotation. So there are other cases are also involved. स्पेशली मैंने कहा ना प्रॉब्लम स्पेशली कब होता है? व्हेन इट इज अ काइंड ऑफ अ zigzag शेप. आप लोगों ने शेप नोट किया होगा. टिपिकली नॉर्मल केस में प्रॉब्लम नहीं आता है. नॉर्मल केस में आपके नॉर्मल फॉर्मूला से भी काम हो जाएगा. बट व्हेन यू गो विद लाइक अ zigzag शेप, नाउ दिस सॉर्ट ऑफ शेप इज देयर, you take it granted your left rotation will not solve the problem, neither your right rotation is going to solve the problem. तो सर ऐसे वक्त में क्या करते हैं? ऐसे वक्त में कुछ स्पेशलाइज लॉजिक लगाने पड़ते हैं. एंड दिस लॉजिक आई एम ट्राइंग टू एक्सप्लेन यू. मैंने कहा ना मैं अभी इसको सिर्फ थियोरेटिकली बता रहा हूं, मैं कोडिंग लेवल पे बिल्कुल नहीं जा रहा हूं. इवन दो यू गेट द लॉजिक, दैट शुड बी मोर देन सफिशिएंट. मोर देन सफिशिएंट. इन राइट साइड, हाउ बैलेंस फैक्टर इज -3. हाउ इट इज -3? ओके पूजा, टेक अ लुक एट दिस. एंड इफ यू आर हैविंग डाउट प्लीज आस्क अर्ली. इसका जो लेफ्ट सब ट्री है, इसका लेफ्ट सब ट्री इट इज -1. आई होप यू अंडरस्टैंड. और इसका जो राइट सब ट्री है, ये जो राइट सब ट्री है, उसका हाइट, उसका हाइट दैट कम्स आउट टू बी 0 1 2. इट इज 2. एंड देन यू फाइंड दैट -1 -1 -2 comes out to be -3. That is balance factor. Okay, that is good. As far as the right वाला कंसर्न है, राइट्स की साइड में ए दिस वन इज नथिंग बट -1. इसका जो राइट साइड है बैलेंस फैक्टर इज -1. और लेफ्ट साइड जो है इट इज 0 1 2. जो आपका लेफ्ट ट्री है उसका बैलेंस फैक्टर है 2. एंड देन यू डू द कैलकुलेशन, इट इज 2 minus -1. 2 minus -1 comes out to be 3. पूजा, ऑल राइट, नो प्रॉब्लम. सो आई एम सेइंग दैट कि ये आप लोग करने की कोशिश करो एंड देन यू रियलाइज दैट ये बैलेंसिंग नहीं हो रहा है. तो लेट अस सी द स्पेशल केसेस कि कहां पर कौन सा रोटेशन likely to done. Let us take a look at this. Here you find I'm taking the cases one by one, and this is a case where I'm saying that it is a left case. Now what is the left case? Take a look at this. जो पहले ये समझो कि जो नोड आपका अनबैलेंस है, हम लोग उसके विद रिस्पेक्ट टू दैट बात कर रहे हैं. एक बात बताओ, W is it balanced? Is W is balanced? Yes, W is balanced. Is X is balanced? Is X is balanced? Yes, X is also balanced. There is no problem. Is Y is balanced? No, Y is not balanced. क्योंकि इसका जो बैलेंस फैक्टर है, इसका बैलेंस फैक्टर अब आपको दिख रहा है, इसका बैलेंस फैक्टर है 2. इसका बैलेंस फैक्टर इज 2. एंड दिस इसका बैलेंस फैक्टर है 2. नाउ आई एम सेइंग दैट यू नीड अ काइंड ऑफ अ रोटेशन. तो जिसका आपको बैलेंस फैक्टर, ये जिसके बैलेंस फैक्टर में आपको प्रॉब्लम है, जिसके बैलेंस फैक्टर में आपको प्रॉब्लम है, आई एम सेइंग दैट यू अप्लाई द रोटेशन, you apply the rotation on, you apply the rotation on its parent, something like this. And if you apply the rotation, यहां पर मैं क्या कह रहा हूं, लेफ्ट केस क्या कह रहे हैं कि जो नोड आपका, हैव अ लुक एट दिस, जो नोड आपका अनबैलेंस्ड है, ये जो पेरेंट है, ये पेरेंट के लेफ्ट में, ये आपके पेरेंट के लेफ्ट में, और जो अनबैलेंस है उसका चाइल्ड भी उसके लेफ्ट में. सो आई एम सेइंग दैट दिस इज लेफ्ट एंड दिस इज आल्सो लेफ्ट. And since it is left, I'm saying it is a left case. In this case, what rotation looks good? ऐसे केस में कौन सा रोटेशन करना चाहिए? The diagram makes it very clear. I should be having a right rotation. And if I do the right rotation onto this, what it will tell me? Okay, go ahead. A root में कौन आएगा? Root will be y. Yes. Z will be below that. X is over that. और ये जो भी है W will be below that. I guess, is it balanced? Is it balanced? Yes, look like it is balanced. That is fantastic. Left case. Left case मतलब क्या? जो नोड आपका अनबैलेंस है, ठीक है, यू फाइंड दैट उसका चाइल्ड और फिर उसका चाइल्ड. ओके, दैट इज गुड.
You continue further. This case again looks very simple. You find that this node is unbalanced. This node is kind of unbalanced, and you find that उसका उसका चाइल्ड उसके राइट में है, और वो उसके चाइल्ड उसके पेरेंट का वो भी राइट चाइल्ड है, तो उसके पेरेंट का वापिस से राइट चाइल्ड है. And now I'm able to see that yes, it is unbalanced. All I need to do is that I need to simply apply the left rotation on Z. If I apply, ये इसको कहते हैं right rate case. It is right rate case. Just apply the left rotation. And can you tell me which is like a new parent over here? New root over here? New root will be Y. Y के left में, Y के left में, Y के left में it will be Z, और Y के right में it will be X, और X के नीचे जो आपका W node है, let it be as it is. I don't bother about. This is nothing but simple cases. And here comes the problematic cases. In cases में by looking at the balance factor is -2 or +2 हम लोग decision ले सकते हैं. But there comes the complicated cases. The case that I was trying to explain you earlier. Now here you find that your Y node is unbalanced. आपको दिख ही रहा है. A Y node is unbalanced, and then a Z node is again, ये जो आपको दिख रहा है जो अनबैलेंस्ड है, ये जो अनबैलेंस्ड है, ये आपके पेरेंट का लेफ्ट है, पे अटेंशन, और उसका जो चाइल्ड है ये उसके राइट में, उसका जो चाइल्ड है उसके राइट में. सो दिस इज फॉर्मिंग अ काइंड ऑफ अ zigzag शेप. सो व्हेनेवर यू कम अक्रॉस दिस सॉर्ट ऑफ केस, ऐसे केस में क्या किया जाता है? ऐसे केस में एक रोटेशन से प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होता है. प्लीज नोट, ऐसे केस में अगर एक रोटेशन करते तो क्या होता है, मैंने आपको पहले ही दिखाया. एक रोटेशन से प्रॉब्लम नहीं सॉल्व होता है. इट इज अ टू स्टेप प्रोसेस. इट इज अ टू स्टेप प्रोसेस. द फर्स्ट स्टेप is nothing but, I would say that you apply left rotate, a left rotate on Y. You first apply left rotation on Y. You applied left rotation on Y. Can you please tell me Y के जगह पे कौन आएगा? Left rotation on Y. Y की जगह पे आएगा X. X के लेफ्ट में, X के लेफ्ट में Y, और उसके बाद में, और W कहां पर जाएगा? W कहां पर जाएगा? Now you find that W must go to the Y's right. X के राइट में नहीं जाएगा ना. X के राइट में कैसे जाएगा? हम लोग रोटेशन कर रहे हैं ना. We are doing the left rotation. We are doing the left rotation. So with the left rotation, Y will come on to this side. तो जो X के लेफ्ट में जो कुछ भी था, जो X के लेफ्ट में था, that will go to the Y's right. But wait, आपका जो Z है, ये Z अभी भी अपने जगह पे है. Now you apply the second step. Now you apply the second step, and the second step now is nothing but apply right rotate. Apply right rotate on Z. ये apply right rotate on Z. अब बोलो, which will be the new root? New root will be X. X के राइट में, X के राइट में it is Z. X के लेफ्ट में it is Y, and then Y के राइट में W जैसे पहले था वैसे ही. Check, is it balanced? Is it balanced? Yes, look like it is balanced. And this is what I'm saying, that this case is said to be left right case. This case is said to be left right case. तो जब जब zigzag shape होते हैं, एक रोटेशन से प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होता है. तो if it is a kind of a left right case, I need to apply left rotation plus right rotation. Okay, that is good. And then obviously you can understand the last case as well. The last case as well, the diagram is in front of you. You find that the node which is unbalanced, it is Y, जो अपने पेरेंट का राइट है, जो अपने पेरेंट का राइट है, और उसका चाइल्ड उसका लेफ्ट है, उसका चाइल्ड उसका लेफ्ट है. Now this is a case you referred as right left case. And right left case, again it is a two-step process. Step number 1, you first apply the right rotation on Y. A right rotation on Y, a go ahead, right rotation on Y. Y की जगह पे कौन आएगा? Y की जगह पे X आएगा, राइट? Y की जगह पे X आएगा, और फिर आप इसको पुल कर रहे हो, X will come on this. X के राइट में
x के राइट में y जाएगा, लेकिन x के राइट में जो पहले w था, x के राइट में जो पहले w था, that will get lost, so I need to put it into the y's left, into the y's left. और वैसे इसका कोई प्रॉब्लम नहीं है, पेरेंट वो तो अपनी जगह पे वैसे भी रहेगा, not a problem. This will sort out like a first step, and after the first step you go ahead and you apply the left rotation on z. Now as you apply left rotation on z, it is left rotate on z, बोलो which will be root, yes, x will come on the top, z will come down, and then you have got like a y over here and then x over here. Is it balanced? Is this balanced? Yes. So you understood that कि कौन से केस में कौन सा रोटेशन ज्यादा सुटेबल है. तो सर आपका क्या कहना है? तो डू यू वांट मी, नहीं डू यू वांट मी मतलब मैं करने वाला नहीं हूं. सो व्हाट इज बेटर? क्या हुआ? अच्छा ओके सॉरी, भावनाओं को समझो. वो मैं फ्लो में भूल गया. यहाँ पर x कहाँ से आएगा ना, x ऑलरेडी ऊपर गया है, सॉरी. हाँ w यहाँ पर, हाँ कमिंग बैक. तो मैं कहाँ पर था, मैं आपको ये बता रहा था. सो इट इज लाइक अ राइट रोटेशन, लेफ्ट रोटेशन, द दिस जगलर इज ओके. बट डू यू बिलीव दैट दिस इज अ गुड आइडिया कि पहले आप लोग क्या करो, पहले आप लोग पूरा ट्री बनाओ, उस ट्री को पूरा अनबैलेंस होने दो और उसके बाद में जाके उसको बैलेंस करो. डू यू बिलीव दैट इट इज गुड आइडिया कि पहले ट्री के अंदर सारे नोड ऐड कर लो, कैसे भी नोड ऐड कर लो, पहले नोड ऐड कर लो और उसके बाद में जाके उसको बैलेंस करो. इट इज वेरी बैड आइडिया. व्हाट इज गुड आइडिया? व्हाट इज गुड आइडिया? व्हाट इज बेटर आइडिया? The better idea is that every time you are adding a node, moment you find that something is unbalanced, immediately balance that much. Every time you are adding a node, moment you find that something is unbalanced, immediately balance that node. Sir, नहीं समझा? I'll give you example. Please pay attention. I'll give you example. वो जो हम लोग skewed binary tree बना रहे थे, मैं थोड़ा सा उसके ऊपर जा रहा हूँ. Please pay attention. Suppose that the first node that I got was 70 and I added 70. Is it balanced? Is this balanced? मैं skewed binary tree का process वापस से बता रहा हूँ. हाँ, so 70. Okay, that is good. Let us add 60. Let us add 60. And if I add 60, is 60 is balanced? Is 70 is balanced? Okay, that is good. Let us add 50. Let us add 50. Tell me, is 50 is balanced? Yes. 60 is balanced? Yes. 70 is balanced? 70 is balanced? Oh, no, 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 no. 70 is not balanced. And if the 70 is not balanced, I see it very clearly that this is a kind of a left-left case. And if it is a kind of a left-left case, what should I do? A diagram आपको खुद ही बता रहा है what you should do. I'm saying that in your add function itself, you embed the logic of a rotation. You do the right rotation on 70. As you do the right rotation on 70, you find that 60 comes over here, 70 comes over there, 50 comes over here. Okay, that is good. Let me add the next node. Let me add 40 now. Let me add 40 now. And if I add 40, where 40 will go? Where 40 will go? 40 will go to the left of 50. Now tell me, is it balanced? Is this balanced? 40 is balanced, yes. 50 is balanced, yes. 60 is balanced, yes. 70 is balanced, yes. Everything is balanced. Everything is balanced. इसमें कुछ करने की जरूरत नहीं है. You continue further. You add one more. You add 30. Is 30 is balanced? Yes. Is 40 is balanced? Yes. Is 50 is balanced? Is 50 is balanced? Oh, no, 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 no. 50 is not balanced. And if the 50 is not balanced, which is again very clearly saying me that this is once again a left-left case. And if it is once again a left-left case, all I need to do is to apply a rotation on that. This left-left case. So you follow the right rotation on that. You apply right rotation on that, and the new diagram that I should see somewhere will be
saying like this: a 40 over here, 30 over here, 50 over here, 60 over here, 70 over here. Okay, that is good. This is good. So I found, yes, this has been changed. Okay, you continue further. You continue further. You continue further. And let us add one or two more nodes. As I'm adding one more node, please pay attention. As I'm adding one more node, I'm adding one more node. Let's say I'm adding 20. Check. Is 20 is balanced? 20 is balanced? Yes. 30 is balanced? 30 is balanced? जो भी नोड ऐड किया है आपको उसके सारे एंसेस्टर चेक करने हैं, बाकी किसी को चेक करने की जरूरत नहीं है. जो भी नोड ऐड किया है उसके सारे एंसेस्टर्स हम लोग चेक करते जाएंगे. 20 is balanced, 30 is balanced, 40 is balanced, 60 is balanced, 60 is balanced. Sorry, 60 is not balanced, and 60 is not balanced, which is again telling me that this is still a kind of a left case. And if it is still a left case, I need to again go ahead and now I need to apply once again a kind of a right rotation. You apply once again right rotation. अब थोड़ा सा complicated है. Complicated in the sense you will be able to do that. A 40 comes on the top. I hope you understand. 60 goes to the right. 70 goes to the right. 40 के नीचे 30 पहले भी था, 20 पहले भी था. That is all right. And then what is next? What is next? जो 50, A50 जो 40 के लेफ्ट में था, A50 जो 40 के लेफ्ट में था, that should go into the 60s left. And now you check, is everything balanced? Is everything balanced? Yes, absolutely. यहाँ पर हम लोग कर क्या रहे? You can continue the process further. अब वापस से अगर 10 ऐड करोगे तो आपको 30 के ऊपर वापस से रोटेशन करना पड़ेगा and you will find that everything will get balanced. यहाँ पर हम लोग कर क्या रहे हैं? हम लोग बैलेंसिंग का लॉजिक कब रन कर रहे हैं? Every time we add a node, listen, every time we add a node, we are checking, is that node balance? Is its parent balance? Is its parent balance? Is its parent balance? Up to all its ancestors I'm checking. And moment I find someone is unbalanced, depending on a case, I'm applying the appropriate left rotation or right rotation, or sometimes it might be even a combination. Left right rotation or right left rotation, so you can apply the combination and you can come up with the result. ये मैंने हर एक ऐड ऑपरेशन में किया है. अब जो मैंने ऐड के अंदर किया है, प्लीज विजुअलाइज दैट सेम इज पॉसिबल फॉर द डिलीट ऑल्सो. आई होप यू एग्री. सेम इज पॉसिबल फॉर द डिलीट ऑल्सो. एम आई करेक्ट? ए डिलीट के वक्त भी एवरी टाइम यू डिलीट अ नोड एंड यू चेक, अरे यार मोमेंट आई डिलीटेड दिस नोड, is something is still unbalanced, and if not then apply the rotation. तो मैं क्या कह रहा हूं, हम लोग ऐसा नहीं कर रहे कि पहले पूरा ट्री बना लो और ट्री बनाने के बाद में अब उसको रोटेशन करो. मैं कह रहा हूं ऑन एवरी ऐड फंक्शन एंड एवरी डिलीट फंक्शन वी अप्लाइड एज समवन किशोर इज सेइंग दैट. तो क्या हम लोग उसको स्टैक के ऊपर डाल रहे हैं? यस किशोर, हम या तो आप लोग को उसको स्टैक के ऊपर डाल रहे हो या फिर यू कैन डू इट यूजिंग रिकर्शन. या तो स्टैक के ऊपर डालो या तो यूजिंग रिकर्शन करो, और जैसे ही आपने एलिमेंट ऐड या डिलीट किया उसके सारे पेरेंट चेक करो, और मोमेंट यू चेक द पेरेंट, जहां पर आपको अनबैलेंस नजर आए, जहां पर आपको अनबैलेंस नजर आए वैसे ही, जैसे अनबैलेंस नजर आए वैसे ही अप्लाई द अप्रोप्रिएट रोटेशन एंड बैलेंस इट. सर आप क्या पढ़ा रहे हो? मैं जो पढ़ा रहा हूं इसको कहते हैं एवीएल ट्री. इसको कहते हैं एवीएल ट्री. What is AVL tree? The AVL tree is self-balancing binary search tree. It is self-balancing binary search tree. The difference between height of left and right subtrees cannot be more than 1 for all the node. In short, आपका balance factor -1 to +1 के range में होना चाहिए. And then what you're doing is that, what we are doing over here, nodes are rebalanced on each insert operation and on each delete operation. So हर एक insert और हर एक delete में आप लोग उसको क्या कर रहे हो? रीबैलेंसिंग कर रहे हो. हर एक insert और हर एक delete में आप उसको रीबैलेंस करवा रहे हो, and that is something you call it as a AVL tree. You call it as a AVL tree. By the way, what is the advantage of this?
The advantage is that you find that number of iterations, a number of iterations, अब आपका हाइट हमेशा कम से कम रहेगा, और अगर आपका हाइट कम से कम रहेगा, इन जनरल मैं अप्रोक्सीमेटली कह रहा हूं, अप्रोक्सीमेटली 2 रेस टू एच, 2 रेस टू एच इज इक्वल टू एन, अप्रोक्सीमेटली, एक्चुअली 2 रेस टू एच प्लस 1 होना चाहिए, ये आपको पता है, बट स्टिल अप्रोक्सीमेटली 2 रेस टू एच इज इक्वल टू एन. You can take a log on both side. If you take a log on both side, you realize that h is equal to h into log 2 is equal to log of n, and then your height itself is log n by log 2. और आपको पता है टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, द टाइम रिक्वायर्ड इज प्रोपोर्शनल टू हाइट, a time required is proportional to height, so time required is proportional to log n by log 2, where log 2 is constant, and if the log 2 is constant, then it is order of log n. Now it is order of log n. This is something you need to take care, and that is the reason हम लोग इसके जो सारे operations हैं, all those operations, all operation मतलब क्या, your add operation, delete operation and search operation, all these operations are done into O of log n. Is this clear? Or is this clear? That is what AVL tree. So AVL, इसका नाम ये अजीबोगरीब नाम क्यों रखा है? The AVL name came from the name of scientist. Name of scientist. Yes, it is Adelson Veleski and Landis. ये तीन लोग नहीं है, दो लोग हैं. ये Adelson Veleski is one person and then Landis is the second person. So ये दो लोगों ने मिलके ये बनाया हुआ ट्री है. You call it as a AVL tree. What I'm saying is that यहाँ पर हम लोग क्या कह रहे हैं, अप्रोक्सीमेटली 2 raised to h is equal to n. मैंने अप्रोक्सीमेटली कहा क्योंकि टू बी प्रिसाइज इट इज 2 raised to h plus 1 minus 1. मैंने आपको लास्ट टाइम फॉर्मूला बताया था. सो यू अंडरस्टैंड दैट इट इज इन ऑर्डर. all we are doing is that take a log on both side. If you take a log on both side, आपको पता है जो एक्सपोनेंशियल में है वो नीचे मल्टीप्लिकेशन में आता है. So h into log 2 is equal to log n. Oh, I understand that. And then you continue further. H is equal to log of n by log of 2. Okay, log of n by log of 2. And then time required is proportional to h, क्योंकि उतने ज्यादा इटरेशंस लगने वाले हैं. अगर उतने ज्यादा इटरेशंस लगने वाले हैं, उतने ज्यादा इटरेशंस लगने वाले हैं, you follow, so you find that it is log n by log 2 and 1 by log 2 is a constant. If 1 by log 2 is a constant, I'm saying that the time complexity will be O of log n. आप लोग इंसर्ट कर रहे हो तो भी मैक्सिमम log n iterations are there, डिलीट कर रहे हो तो भी मैक्सिमम log n iterations are there, और अगर आप लोग उसको बाइनरी सर्च कर रहे हो तो भी मैक्सिमम log n iterations are there. I hope Sachin it is all right. Right? This is done. And I'm saying that this tree is said to be AVL tree. अब ये AVL tree अच्छा है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है. However, अगर आपको इसको और ऑप्टिमाइज करना है, नंबर ऑफ रोटेशंस मिनिमाइज करने हैं, तो AVL tree का एक और वेरिएशन है. AVL tree का एक और वेरिएशन है, what we call it is a red and black tree. So what is red and black tree? Red and black tree is also kind of a AVL tree. It is a kind of a AVL tree. It is also a kind of self-balancing binary tree. It is also kind of self-balancing. Self-balancing का मतलब होता है हर एक इंसर्ट और डिलीट के ऊपर वो खुद को बैलेंस करवा लेता है, उसको कहा जाता है सेल्फ बैलेंसिंग. तो रेड एंड ब्लैक ट्री इज ऑल्सो काइंड ऑफ अ सेल्फ बैलेंसिंग ट्री. आप उसकी चिंता मत करो. However, 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 this is taking less number of rotations. That's it. Red and black tree आपके सिलेबस में मुझको नहीं दिखा, but I just tell you when it come down to the comparison, you understand that AVL tree and red and black tree ये दोनों similar है, but red and black tree में number of rotations कम होते हैं. That's it. This is like important trees. I hope now AVL tree is clear what I mean by it. Now I guess it is already 11 o'clock. What we'll do is